Subscribe to my channel and press the bell icon for latest updates. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. The trip hop grooves wrap around my very being. Four place rhymes the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words, unveiling my intentions. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. The trip hop grooves wrap around my very being. Four place rhymes the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words, unveiling my intentions. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity
The trip hop moves wrap around my very being. Fall place rhymes the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words, unveiling my intentions. नहीं कर पाएंगे, इसलिए बैकग्राउंड पर डबल क्लिक करेंगे और फिर बैकग्राउंड को एडिटेबल लेयर में बदलने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम उस पर राइट क्लिक करके लेयर को डुप्लीकेट कर सकते हैं, या हम इसे डुप्लीकेट करने के लिए Ctrl+J दबा सकते हैं। ये हमें ओरिजिनल इमेज के साथ एडजस्टमेंट्स को क्रॉस चेयर डुप्लीकेट होने के बाद हम इसे नाम देंगे। अब हम पहले इमेज पर, फिर एडजस्टमेंट्स पर और फिर वाइब्रेंस पर क्लिक करेंगे। चलो हम वाइब्रेंस वैल्यू से थोड़ा खिलवाड़ करते हैं। यहाँ हम स्किन टोन में बदलाव को नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि हम वाइब्रेंस को बढ़ाते या घटाते हैं। इस इमेज में हम और ज्यादा नेचुरल स्किन टोन प्राप्त करने के लिए वाइब्रेंस को करते समय आपको एग्जैक्ट वैल्यू तय करने की आवश्यकता होगी। यहाँ इस्तेमाल की गई वैल्यूज आपकी इमेज के लिए शायद सही ना हो। ओके पर क्लिक करें। अब दो इमेजेस के बीच का अंतर देखने के लिए लेयर विजिबिलिटी आई पर क्लिक करें। वाइब्रेंस एक स्मार्ट टूल है जो होशियारी से ज्यादा म्यूट कलर्स की तीव्रता को बढ़ाता है तथा वेल सैचुरेटेड कलर्स को वैसे ही छोड़ देता है जैसे कि वे पहले से थे। हमारे मामले में वाइब्रेंस ने इमेज में अन्य तत्वों को डीसैचुरेट होने से बचाया है। संक्षेप में, वाइब्रेंस ने इमेज में अन्य तत्वों के या सैचुरेटेड होने से बचने के लिए बिल्ट इन प्रोटेक्शन से मदद की है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस बेहतरीन फीचर को फोटोशॉप में आजमाते हैं। Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. As I fly high. The trip hop moves wrap around my very being. Fall place rhymes the soundtrack to what I'm seeing. Abstract thoughts flow through these astral dimensions. I paint pictures with words, unveiling my intentions. Lost in this cosmic abyss, my mind takes flight. The echoes pulsating, setting the
सही कह रहे हो, पर भैया थोड़ी झिझक तो होती है ना। इसी झिझक को निकालने का और आपके कॉन्फिडेंस यानी कि उससे तो यही पता चल रहा है कि तुम लोगों में कितना बदलाव आया है, जो तुम में पहले नहीं था। और ये बदलाव इसीलिए आया है क्योंकि तुम लोग क्लास जाने लगे और अपने आप में वो आत्मविश्वास और भरोसा पैदा कर सके। अब जब इतना सब मान रहे हो तो फिर दे, तुम बस अपना इंटरव्यू अच्छे से देना। वो तो मैं दूंगा ही।